guys, what's up and welcome back to my Python programming series. And in this video I will be teaching you about logical operators, what logical operator is and how do we use them. So the first thing we need to know is we use logical operator when we need to evaluate multiple conditions at the same time in the same given statement. We will be learning OR operator, AND operator and NOT operator. So let's start with OR operator first. In OR operator, at least one condition must be true to print the value you need. So we will take an example. So let's go with कि आपका एक event है, outdoor event है, and you have to calculate if the temperature and if it is raining or not. So first of all, we will make a temp variable which is full form temperature. और temperature हम अभी fix रखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस and मैं एक और variable बनाऊंगा is raining. या और मैं इसको फॉल्स रखता हूँ अभी के लिए एंड मेरे को कंडीशन चेक करनी है कि इफ दिस द कंडीशन इज ट्रू देन द event will be cancelled. Let's go with the first temperature. If the temperature is greater than 35 degrees Celsius, then the event is cancelled. Or if the temperature is less than 0, अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा या फिर 0 से नीचे होगा तो इवेंट कैंसिल हो जाएगा. और इफ इट इज रेनिंग अगर ट्रू होगा देन ऑल्सो द इवेंट विल बी कैंसल्ड. देन आई विल पुट कॉलन एंड आई विल प्रिंट द आउटडोर event is cancelled. And if none of the conditions are true, then we will print the outdoor event is still scheduled. Let's make T capital. The outdoor event is still scheduled. So let's run this. So the outdoor event is still scheduled. ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है because all the statement are false. Because our temperature is 25 degree Celsius जो कि less than 35 है and more than 0 degree Celsius and it is raining is also false. बारिश नहीं हो रही है. So अगर हमें यहाँ पे 35 मतलब 25 के जगह लेट्स से 50 डिग्री सेल्सियस है तो कुछ ज़्यादा गर्मी है, वेरी हॉट, and if we run this the outdoor event is cancelled because the temperature is more than 35. And if I make it less than 0 like -5 degree Celsius, it is very cold, so again the outdoor event is cancelled. So let's take another example. Temperature is 20 degrees Celsius, which is very nice temperature for any event you are planning, but is raining is true. It is raining outside, so again the outdoor event is cancelled because बाहर बारिश हो रही है, so you can't hold any event. So this is OR operator and how we use it. So to in OR operator एक condition true होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे इस कंडीशन इस रेनिंग वाली कंडीशन ट्रू हो गई, सो ये प्रिंट हो गया. और पिछले वाले में टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर 0 डिग्री या फिर ये ट्रू हो रही थी. तो और में हमेशा याद रखिएगा एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो गई सो इट विल make the whole statement true. Even if one condition is true, whole statement is true. So now हम चलते हैं अपने next operator की ओर, AND operator. In this you need to have both condition must be true. So in AND operator we have to check if both the condition is true. Even if one condition is false, then the whole statement is false. So I will just
cut this. Okay, let's go with this example only, but a little bit different. Let's take our temperature as 25, and if we will check if it is sunny or not. Okay, let's go with true first, and I will put the condition if temperature is greater than equal to let's take 28 degrees Celsius and is sunny, and colon. So we will print it is hot outside. It is hot outside. I will add an emoji to make it more fun. And इसके साथ में प्रिंट करूंगा it is sunny. It is sunny. एंड मैं यहाँ पे सनी की इमोजी डाल देता हूँ, सन की. फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ एलिफ, एंड यहाँ पे मैं टेम्परेचर एक और टेम्परेचर लेता हूँ. इफ टेम्परेचर इज लेस देन 0 and is sunny. So here we are checking two statements, two conditions. Print it is very cold outside. It's cold outside. मैं यहाँ पे एक इमोजी डाल देता हूँ कोल्ड की. यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ इट इज सनी. इट इज सनी. सनी एंड सन की इमोजी. And if I run this now, what do you think the output will be? It is nothing. Why? Because in the both example we have taken, none of the conditions are matching. In this, temperature must be greater than equal to 28, and the second statement is true but the first is false. जैसे मैंने बताया कि एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इसमें एक भी फॉल्स हो गई तो पूरी स्टेटमेंट फॉल्स है. जैसे यहाँ पे भी इस सनी तो ट्रू है बिकॉज यहाँ पे हमने ट्रू रखा है इसको, बट temperature condition is wrong in both of this. It is not matching. That's why whenever we are running this, nothing will be printed. और अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर दूँ लाइक 28 कर दूँ which is equal to 28, so it will print it is hot outside and it is sunny. So to print the value in एंड ऑपरेटर, एंड में अगर आपको वैल्यू ऐसे प्रिंट करवानी है जैसे, तो इसमें बोथ कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. अगर एंड प्रिंट करेंगे तो बोथ द कंडीशन मस्ट बी ट्रू. दोनों अगर ट्रू होगी तभी ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी. अगर एक भी गलत हो गई तो पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. और मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ एलिफ टेम्परेचर is greater than, I mean less than 28. Temperature is less than 28 and temperature is greater than 0 and is sunny.
देन वी विल प्रिंट, वैसे आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म भी है जो आपने ये इधर लिया है ना अभी, तो इसको मैं एक बार शॉर्ट में भी लिख के बता देता हूँ आपको। अगर हम इसको लिखेंगे इस टाइप से 28 लेस देन मतलब 28 डिग्री सेल्सियस, एंड यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर इज लेस देन 28 एंड ग्रेटर देन 0। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्हाट आई हैव रिटन बिफोर। और इसको अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट हम करते हैं इट इज वार्म आउटसाइड। I will put an emoji here, smiling emoji, smiling emoji. It is warm, so it is nice. Print. It is sunny. And sun ka emoji. If I print this now, it is printing. It is hot outside and it is sunny because अभी first condition ही हमारी true है। और अगर मैं temperature यहाँ पे wait, so put the temperature in minus, which will make our second condition true. So I will print it. Run this. It is cold outside, but it is sunny. And this if the condition is running, and if I make it temperature a little bit reasonable, normal temperature रखा हमने 23 डिग्री सेल्सियस, which is nice. It is warm outside, it is sunny. And there is another thing that we have, not operator. So now we have not operator. In this, it inverts the condition. So if the value is true, now it will be false if we use not true or not false. I will show this with the help of example. Let's take this only. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ and then I will paste it. Paste. I will take and space here. And यहाँ पे मैं हर जगह पे नॉट डाल देता हूँ. नॉट, नॉट, नॉट. So if it is not sunny, what it is? It is cloudy. यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ. सन नहीं है तो मतलब बादल ही होगा. क्लाउडी. इमोजी भी मैं चेंज कर देता हूँ. दिस. It is cloudy. And I will make this false. False. And if the temperature is, let's say, 28, I will run this program. It is hot outside, it is cloudy. It is printing because 28 is 28 and not in case inverts the value, it is sunny. So in this case it will be true. तो देखिए मैं यहाँ पे इस टाइप से बताता हूँ. अगर यहाँ पे मैंने नॉट हटा दिया, if I run this, nothing will be printed because नॉट ऑपरेटर यहाँ पे इस सनी फॉल्स है. बट नॉट ऑपरेटर क्या कर रहा है यहाँ पे? नॉट नॉट ऑपरेटर फॉल्स को ट्रू कर देता है कि अगर वैल्यू ट्रू है देन अगर नॉट लगा दिया उसके सामने तो वो फॉल्स बन जाएगी. अगर वैल्यू फॉल्स है और उसके सामने आपने नॉट लगा दिया तो वैल्यू ट्रू बन जाएगी. नॉट ऑपरेटर क्या करता है? इन्वर्ट द कंडीशन. इफ, यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, नॉट दिस, यहाँ पे अलग से बना देता हूँ. इफ इट इज ट्रू देन
it becomes false, and vice versa. Vice versa. तो if मेरे को ये सेकंड अपनी वैल्यू प्रिंट करवानी है, and I have to take the temperature, and I will take it like -5, which is so it will print it is cold outside and it is cloudy. And if I want to print this value less than 28 temperature, so I will make temperature 23, and I will run this. It is warm outside but it is cloudy. So what not operator it do, it change the value, it inverts the value, the condition mainly. If the condition is true, it will put make the condition false, and if it is false, it will make it true. So this is logical operators. It allows us to evaluate multiple condition with or at least one condition must be true, with and both the condition must be true, both the condition must be true with and with not, it converts the value, converts the condition, it inverts the condition. Not false become for true, and not true becomes false. So if it is true, then it becomes false, and vice versa. If it is false, it becomes true. So this is logical operators in Python. Let's meet in another video. Bye.